Quran chapter 38 verses 32b to 34. Lesson 2804. Title is Everything is from God. Chapter Swad. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 32b. Till they were taken out of sight behind the curtain. Verse 33. Then he said, Bring them back to me, and fell to slashing with his sword their legs and necks. Verse 34. And verily we tried Solomon, and set upon his throne a mere body. Then did he repent. Commentary. Tawarat, the sun disappeared. Masa, drawing the hand over. Here it aimed, he began to cut. Suk, legs. This word is plural of saak, which means calf of the leg. Jasad means body. Kursi, throne, fixed place of sitting. When horses were produced before Solomon, peace be upon him, for making a display, he engaged in looking them so much and was very thankful to Allah Almighty that He gave him such horses, by which he tried to remove mischief from the world. This process took too much time that the sun set and he could not offer prayer of that time, although he was involved in a good work, but the prayer of the time was more compulsory, and due to its delay he was shocked. He ordered, Bring the horses back to me. Then he set about striking their legs and necks. Its reason is, it is better to remove the thing which makes the mankind careless from the remembrance of Allah Almighty. After that, it is commanded, we certainly tried Solomon, peace be upon him, because he became careless from our remembrance for a while, and placed on his throne a body of incomplete babe, which reminded him his error, and he repented wholeheartedly. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والعناب وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں. پھر لاؤ انہیں میرے پاس. پھر لگا جھاڑنے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں. اور ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا. توارت, چھپ گیا, ماضی مؤنث ہے. واو رے یہ سے اس کا فاعل ہے یا مستقر ضمیر راجع الی الشمس ہے, جو العشی سے جو پہلے مذکور ہوا سمجھا جاتا ہے. بعض کے نزدیک ضمیر مستقر کا مرجع الصافنات الجیاد ہے, کیونکہ جمع کے لیے ضمیر مؤنث آ سکتی ہے. مسا, ہاتھ پھیرنا. مسا بے, ہاتھ پھیرا اس پر. سوک, پنڈلیاں. ساک کی جمع ہے. جسد, بدن. کرسی, تخت, بیٹھنے کی جمی ہوئی چوکی وغیرہ. اس کا مادہ کاف رے سین کرس کے معنی ایک جگہ جمع کرنے, جمع دینے کے ہیں. اسی سے
कुर्रासा है, यानी कागज़ों का छोटा सा मजमूआ, कापी। जिस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने घोड़ों की परेड हुई तो उनके देखने में उनका खूब जी लगा। वो दिल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते जाते थे कि उसने उन्हें ऐसे घोड़े दिए जिससे वो दुनिया में से फसाद मिटाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। इसमें इतनी देर लग गई कि सूरज छुप गया। उस वक्त की नमाज अदा करनी रह गई। अगरचे वो एक नेक काम में ही लगे रहे, मगर वक्त की नमाज ऐसी ज़रूरी चीज़ थी कि उसके रह जाने का उन्हें सख्त सदमा हुआ और हुक्म दिया कि उन्हें फिर वापस मेरे पास लाओ। और तलवार लेकर घोड़ों की पिंडलियाँ और गर्दनें काटनी शुरू कर दी, इसलिए कि जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल कर दे उसका मिटा देना ही बेहतर है। इसके बाद इरशाद है कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने ज़िक्र से नम भर के लिए गाफिल हो जाने पर, जिसका ज़िक्र आगे के सबक में है, आजमाइश में मुब्तला किया। उनके तख्त पर एक अधूरे बच्चे का धड़ ला कर डाल दिया, जिसकी तशरीह आगे के सबक में है। इससे उन्हें अपना कसूर याद आया और सिद्क दिल से तौबा की। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीयुल करीम।